I created another universe and founded paradise for I, Fischl, and the Prinzessin de Amore Tea House only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. चल 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 गली गली निकल लेंगे भाई साहब। क्रायो रखना पड़ेगा ये काम। पायरो भी है, क्रायो पायरो हो गए दोनों। Hey Harshit. This place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. ये आवाज कितनी क्यूट रखी है यार। All right, yes. You too. मतलब हमें लड़ना ही पड़ेगा, हम लोग बैठ के बात नहीं सुलझा सकते। ओए गिरना नहीं, मर जाएगा भाई। क्या म्यूजिक। Beg for mercy. Disappear. Don't hold back. बिल्कुल नहीं होल्ड करेंगे हम। Train harder. क्या फिश ले नहीं खेलते आजकल? अच्छा फिशर लेके नहीं खेलते आजकल। अरे दूसरी टीम बना दी है ना मैंने, तो फिशर यार उतनी काम नहीं आती। फिशर ड्यूलिक के साथ ज़्यादा बेटर लगती है, या कोई अदर पायरो। क्योंकि मेरे को ओवरलोड डैमेज ज़्यादा पसंद है। कौन है? यहाँ से तीर निकल रहे हैं। Hey, hey. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. I must withdraw. हाँ बिल्कुल, लड़ने की कोशिश नहीं को बहुत पहले जाओगे।
Brace yourself. I dare you. Freeze to the core. Don't hold back. Evil conquering. अब तुमने बोला तो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेंगे. चेस्ट क्यों नहीं खुला? ओ ब्लॉक करते हैं भाई ये लोग. चलो अच्छा हेल्थ भरो. I've been bested. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? Brace yourself. Show me what you've got. Don't hold back. Boring. Useless. Allow me. Disappear. Strike first. Worthless. आया खेलो. अरे आया हो नहीं तो चाहिए. देखो अभी प्रीमो हो मैं फुल मारूंगा. Let's light it up. Shudder. Don't hold back. Shudder. I need to train harder. Shut up. वही तो भाई का यार काफी डिमांडेड कैरेक्टर रहा है भाई. इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. More speed. उधर जाने की क्या जरूरत थी? हम नहीं मारेंगे. हम जा रहे नीचे. More speed. More speed. Beg for mercy. Let's light it up. नीचे नहीं जाना. Let's light it up. अरे छोड़ो नहीं मारेंगे. हम गेट ऐसे खोल देंगे. जाओ खोलोगे. खोलो गेट. अबे ऐसी वॉल बना के रखे हैं भाई समझ में नहीं आता. ये देखो ऐसे बना के रखे हुए हैं. Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No. Oh no! Those Tenryo Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? हाँ भाई तो कैसे आई? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ah, ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all.
गुनी तो शुरुआत से ही ओपी, मतलब That's Kojo Sara, हर प्लेयर का काउंटर है। adopted daughter of the बस Kojo प्यूरीफाई family से ही वो Terrier बचा Commission. सकते हो, वरना वो She's सबको also मार a सकती general है। in the Shogun's army. What's she doing here? Make way. Let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. क्यों भाई, ऐसा क्या है? हाँ, Her bad side. ऐसा क्या है जो प्यूरीफाई से Searching नहीं it. बच पाएगा? Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. हैं? Fireworks! भाई, Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's प्यूरीफाई hurry. लगाते ही मेरे को मार देता हूँ। अबे ढंग से वो लगा नहीं पाते होंगे, वरना प्यूरीफाई से बच जाता है भाई। Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. मैं आयका तो मुझे अच्छी तो ये लग रही है मियाँ। Yoimiya! Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. नहीं है, यूज करने का है ना। Look, the coast is clear! Now's our chance! परफेक्ट टाइमिंग पे यूज करोगे तो उसके अल्टीमेट से बच जाओगे, मतलब बस स्टन से ही बचना होता है, बाकी अल्टीमेट से तो तुम चल के भी निकल आ सकते हो। जिसका फर्स्ट से जंप करती है, सेकंड से। Yoimiya, is that you? अबे सबकी शक्ल यहाँ पे एक ही जैसी क्यों लग रही है भाई? It took so long. Come on! We've got no time to lose! Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well, Leave this place. अरे सबकी शक्ल एक ही जैसी है यहाँ पे भाई, कसम से जितने जितने हैं। We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take it. Don't worry about us. तो Just किसका take बैनर care चल of रहा है? मैं Master देखा था Masakatsu. आयका का है या योमिया का है? कहाँ से आयका का है? Good thing we were able to rescue him. Right. It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. How about we go tell Ayaka and the others the good news? जेल हाउस। तो बाद में करेंगे, पहले स्टोरी। Ow! Where did that come from? भाई गेम फंस गया मेरा। ये क्या है? अबे घास हिल रही है,
कैरेक्टर क्यों नहीं हिल रहा है भाई मेरे? ये क्या है? हो यार, ये था क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये हो गया। हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी नहीं है ना? तभी तो देख रहा हूँ, सारा काम छोरियां ही कर रही हैं। Let's go find some treasure. परफेक्ट पार्टी बनाई है मैंने, देख रहा हूँ। 2 छोरे 2 छोरी। हाँ तो कहाँ जाना है हमें? हाँ इसका। भाई वैसे भी गेम वाले भी यही मानते हैं, छोरियां छोरों से कम नहीं है, तभी देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही आते हैं। मेल कैरेक्टर से सबसे कम है इसमें। I see. So Kujo Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. सारा। I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo Sara is also carrying out the Vision Hunt decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, इससे अच्छी मेरे को Master योमिया लग रही है Masakatsu is of no कसम threat से। to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. मोर पायरो यूजर्स आ रहे हैं। Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken My a turn lady. for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts, and the number of samurai out enforcing the Vision Hunt decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? अरे बहुत That इम्पोर्टेंट है sure मकड़ी, has nothing to do with us. Anyway, वरना ये लोग कुछ with कर the ही नहीं Tenryou पाते। Commission busy with preparations, we should. You do present a good point. Being in a constant state of alert will only tire us further. Toma, what would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot. Don't you think it sounds like fun? God of I've what? been wanting God to give of it a try. You really do want to play, huh? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. Let's see what we've got here. Fresh fish fillets, shrimp, bamboo shoots. Nice! You can't go wrong with these. Paimon can't wait. Paimon never thought we'd be the only ones to actually put anything edible into the pot. Don't go wasting the rest now. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. Fortunately, Toma
ended up eating God the of weird sand. stuff. Yeah, you can say that again. But hey, at least I got the most points. Oh, wait a moment. That doesn't feel good. इसको I'm क्या हो afraid गया? it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. हैं? The soup flavor wasn't quite the same afterwards. Even with a traveler's normal ingredients, I still couldn't guess any of them correctly. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. Boiling cakes. भाई I देखो must केक apologize. बॉईल कर रहे हैं ये लोग. To वाओ. be perfectly मतलब honest, वाह. I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. I'm definitely not okay. I need to lie down. केक को कैसे बॉईल किया जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being... Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is... me. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes, if the Tenryo Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Hey Karan. Bye, Toma. Seems we won't need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? ये वही ना बात. अब स्टोरी खत्म हुई. अब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा आइलैंड. मेरे ख्याल से मेरे पास और स्टोरीज होनी नहीं है अभी. है भैया अभी है. अभी कुछ तो है. प्राइवेट कमीशन है. मैं कीबोर्ड फेंक के आता हूँ. कहाँ फेंकने जा रहा है भाई कीबोर्ड? What's the plan? कीबोर्ड क्यों फेंकने जा रहा है? अच्छा गलत लिख गया इस वजह से. वाह. Traveler, Paimon, hold on. Huh? Ayaka? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? हाँ घर की खेती है. खुद के घर के काम भी करा लो उनसे. Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. हाँ मालूम है गेम के इम्पोर्टेंट I कैरेक्टर है. was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things. ये खड़े होके यहाँ सुनना है क्या कोने में? Consequence. इसको बताओ गलत बात है. किसी की बात नहीं सुननी चाहिए. It is one that I have Probably your mom's best buddy, right? never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. भाई वो खड़े होके वहाँ बातें सुनना है. मैं उसको बता नहीं रहा. उसको गलत बात I'm है. very curious about this mysterious individual. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. हाँ गेम में गर्ल्स ही तो हैं. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? हाँ भाई अब अभी नहीं कटेगा. Her address is given in अब the notebook. बड़े बड़े बाल करेंगे. मतलब यहाँ तक कर लेंगे. ठीक है. नया लुक दिखाएंगे तुम लोग को. दाढ़ी भी यहाँ तक होगी. मतलब Greeting gifts. लोग खतरनाक वाला लुक लेंगे. वो गैंगस्टर वाला लुक होता है इसे.
बिल्कुल तुमको वैसे ही नजर आएंगे Everything I have told you in strict क्योंकि अब सावन आ confidence. गया. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. Exactly. घर से कह रहे हैं अब तुम That, जितने and you are खतरनाक also a बन kind, सकते हो बन well-mannered जाओ. person with a बढ़ा लो genuine दाढ़ी, concern for बढ़ा other लो people. बाल. Not to mention trust. You बस can कटाओगे count नहीं. on us. We've done greeting gifts before, so we should be able to help. अभी गैंगस्टर वाला लुक रखेंगे पूरा. Just treat us to some delicious food, and we'll be more than happy. अरे तो वो भी गैंगस्टर नहीं मिलेगी, बैड गर्ल. In fact, I was hoping to take this opportunity to show you both around, if you don't mind, of course. गुड गर्ल किसको चाहिए? Oh, we don't mind. मेरी गुड गर्ल अब बची भी नहीं है. Do we? Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. Alright, sounds good. नहीं का पूरा गैंगस्टर वाला लुक रखे. तो देखो कितनी बड़ी दाढ़ी होती है मेरी. सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा. हाँ क्योंकि हम चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकते. It always rains when I go on an adventure. We're looking for the Great Muchina Yokai! ये कौन है? Do you know where it lives? ना. Great Muchina Yokai? What's that? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. हाँ मॉन्स्टर साले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? And can even shapeshift into anything it wants. सही है, बच्चों का कोई भरोसा नहीं. One time, the Great Mujina Yokai stole some rice from our house. And this other time, it pushed my dad into the river. हाँ फिर भी खड़े होके यहाँ पे मजे ले रहे हो. Very naughty little monster. Because we finally found out how to chase it away. My dad said that the Great Mujina Yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. So all we need to do is chase it away. हाँ Then we can come out and play whenever we want. This monster sounds scary. ए नमन Surely your parents must be worried. Oh, not really. I told my खेला है dad that I Zuma. was gonna find the Great Mujina मैंने Yokai. जस्ट So अभी we स्टोरी can get out. कंप्लीट करी, खत्म मतलब कंप्लीट क्या करी अभी भी नहीं हुई. Sounds very... Yeah, Paimon feels like the Great... We should tell... Oh, children! Huh? पता है इसको मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था, 5 बजे तक खेला सारा, फिर भी स्टोरी खत्म नहीं हुई और अभी भी स्टोरी चल रही. मेरे को ज्यादा बड़ी स्टोरी दे दी है. ये अच्छा है. ये They don't want you wandering too काफी समय से वेट कर रहे थे भाई. dangerous. That's not true. The Great Mujina Yokai is definitely... Yeah! Yoimiya! We told her all about the Great Mujina Yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away instead. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said... But... Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. ए योमी Hold on, don't go! काहे भाई, काहे. अच्छा हाँ सॉरी, एग्जाम है ब्रो. सही भूल गया था मैं. सही अच्छा नहीं मतलब. अरे नया अच्छा शुरू कर दिया इन लोगों ने. सोचा था अभी जाके स्टोरी खत्म हुई है, मैं एक्सप्लोर मारूंगा. वाओ Shut up! यही होता है जब ज्यादा नहीं खेलो ना तो कोई बटन दबती रहती है. More speed. आज भाई पहली बार जाके इतने समय बाद जाके मैंने एल्बियन में करप्टेड डंजन किया, पता है. Mujina Yokai not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. That's because the Great वो Mujina भी साले Yokai इन्वेडेड हो गया था, is- किसी तरीके बचा मैं. It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, remember to come and pick up the हाँ ribbon. किसी तरीके में However बचा. the Great Mujina Yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. It's up to you guys to protect your homes, your crops. Got it. Thanks, Miss. Oh yeah, hold up a sec. If you just tell them it's from Yoimiya, they'll know what it's about. Okay.
Thanks, sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. इसकी वॉइस कितनी क्यूट है यार। आयकाश मुझे अच्छा आता चाहिए कभी। So... So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries though, I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Okay, but it definitely doesn't exist. Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks वो cool देखो ऊपर and गार्डन में it's घूम got रहा है, legs and मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। So, I guess now the kid's impression of the Great Mujina Yokai is mostly influenced by me. Huh. So in a way, this monster... Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the kids from staying out all the time. But they could have easily had other reasons too. If I just go ahead and tell them that the Great Mujina Yokai doesn't exist without knowing the full story, then besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. हाँ I हाँ entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around. नहीं बताओ हमको नहीं जानना। अरे नहीं, हमें कहानी नहीं सुननी है, खत्म करो Right? बस, The खत्म करो। things we believed in when you were kids. If we tear apart these, yeah! okay. हमें बस एक्सप्लोर करना है। Oh, on the subject, are you? खत्म हुआ क्यों नहीं? Is home to the Yai नहीं। Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. कितनी सारी स्टोरी करवाएंगे तो। A lot of them have bad endings though. Like the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. वह कितने प्रीमो है मेरे पास। Or ओ अभी भाई, अभी पुल मारे कपाई। चीची खेलो ना। becomes the next dragon. The secret हाँ, sword चीची खेल once सकते हैं। fought the Hey Pops, I'm back. अभी रुको, अभी पुल करेंगे, The fireworks show. Oh. देखे क्या मिलता है। That can wait. Sorry about this. Really? Much. Pops, Pop, Huh? did they deliver those... Oh. चलो, इसकी शक्ल भी वैसी लग रही है। ये देख, इसको भी उन्होंने बचा के लेके आए थे, सेम वैसे ही लग रहा है हराम Before को। yesterday, and the ones from the day before that. साले शक्ल तो बदल देते लोगों की। No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today. Ah, today's fireworks are almost ready too. No, Pops, the materials. The raw materials for making fireworks. Sorry. Materials. वही तो। Oh, the materials. देख रहा सेम लग रहा है जिसको हम लोग बचा के लेके आए थे। Sorry. Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to. No worries. As long as we know, that's fine. Of course. Leave it to me. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pop something. Uh-huh, that's my Pops. He's a good person, all right. And because my Pops is deaf, he never argues with anyone, and never when I was little... मुझे आयका नहीं चाहिए, मैं ये मम्मी पुल करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए आयका, पसंद नहीं आई मेरे को। ये बहुत क्यूट लग रही है मेरे को, इसकी वॉइस बड़ी मस्त है। It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely. Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right around the corner, and the materials still haven't arrived. We need to think of an alternative. Euemia? Is that you? So... Hold on. कौन है? ये कौन बैठा है? बताना पड़ेगा, इसे किसी घर के ऊपर नहीं चढ़ा जाता है। No one's looking. Okay, you can come. ये छत पे थी, नीचे कैसे उतर आई? We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble.
Sorry, I guess I was a little rash, but इसका when I नाम ही heard नहीं you शो come कर back, नाम I बताओ just... Don't worry, Sakajiro. अच्छा So आप लिख के far, आना at least everything is Sakusiro going great. We're going to look for firework materials shortly. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in... An arrest warrant? Shh! Keep it down! We know if Sakajiro is caught, there's no knowing. Yeah, we know it's going to be... What if the boat casts up if things are the Well, but as soon as... I didn't want to caught... Hey, no... little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they... Wow! It's a family tradition. The slip I have is from back... It'll be fine, whatever their reasons might be. Thank you. All right. Yeah, thank you. Let's not stay out here in the open for... All right, It's a shame. Speaking of, you guys only got here recently. How did... Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. Oh, I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakajiro. बटर कप सुना है कभी नहीं यार नहीं सुना ये कैसा गाना है बटर कप ये कैसा नाम है भाई I just wish the commissions could be a little bit more... I bet no आजकल one वैसे else भी is गाने gonna बड़े sing अजीब like से आ रहे हैं भाई this सुनने का song. मन ही नहीं कर रहा भाई मैं बहुत पुराने पुराने गाने सुन रहा हूँ नए तो सुनना ही छोड़ दिया मैंने समझी भी नहीं आते Well, हैं no matter what, I have to find a way to help. I'm sorry. I invited you to come watch the firework. You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. And नहीं maybe सुना come मेम meet you back सॉन्ग at the तो house बता later. दो ना इस समय मैं वो गाने सुनी नहीं भाई इस समय सारे गाने ही समझ लो मेम सॉन्ग आ रहे हैं भाई मतलब ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं समझी भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है Oh, cool. मतलब पता ही नहीं क्या सोच के गाने बना रहे हैं Can I ask how you two first met? नहीं She saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? अबे बाहर कैसे बढ़ गया आराम को Nothing. ये नहीं है I'm just quite envious of your relationship. अब हम पहले करेंगे हम फूल क्या क्या है इसमें निंगवा है यनफेई है हाँ खैर हमें मिलना है नहीं फिर भी फूल कर लेते हैं देखते क्या मिलता है मामा टोल में भी एक है बता तो रहा हूँ पता नहीं कैसे कैसे गाने लेके आते हैं भाई क्या मतलब क्या सोच के गाने लेके आ रहे हैं इस समय ऐसे में मेरे को ऐसे गोल्डन वाला चमक जाता इतना मस्त लगता नहीं नहीं चाहिए मुझे उसका मैं पसंद नहीं आएगा बिल्कुल योमिया ज़्यादा अच्छी है पहले से ही है एन पे मेरे पास में खैर आप कुछ नहीं मिलना हाँ येन फे मिल गई फोर्टीन है हाँ वो चाहिए मुझे 24 मिल जाए तो एक वेपन बाय कर सकता हूँ मैं एक दो बार और मिल जाएंगे ऐसे ही करेक्टर्स या 4 स्टार्स अभी तो नहीं मिलना था मुझे मालूम था यार तो सिंगल पुल मारते हैं 5 पुल्स के अंदर कुछ मिलता है तो बेटर है तो 3 वो 3 पुल्स में मिल गया कुछ ना कुछ तो मिला है भाई साहब चोंगयोंग मिला है अरे सॉन्ग मिल गया
ओके, 2 कैरेक्टर हमारे हो गए हैं। पता नहीं, जेनफे तो C2 हुई होगी, चोंगयुंग हुआ है C1, चोंगयुंग भी C1 है हमारा। एंड जेनफे भी C1 है। फेजर नहीं है बस। C3, C2, C1, C1, C3, ज़्यादातर कैरेक्टर C1 ही रखे हैं मेरे पास। What? एक चलो पार्टी चेंज करते हैं हम। ये मेरी सबसे पहली पार्टी थी, सॉरी अभी ये कहाँ है, ये रही, ये सबसे पहली पार्टी थी मेरी। Bring my notebook. I will Because bring my notebook. you said person and not floating child or mascot. Koichi, I'm here. How is the boat coming along? Yeah, it's, all right, I guess. Wait, should we really be talking about this in front of them? Oh, don't worry. They're my friends. You can trust them. Yeah, you could say we're all in the same boat. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. Huh? Why is that? Because of the Sokoku decree, the Tenryo Commission is really suspicious of any... I understand. I'm sorry for dragging you into this. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. Right, I'll go fetch the boat now. Thank you. Oh, All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. yep, that's the plan. Oh, That's a long story, actually. Oh, right. Yeah. Got caught up in the And conversation. इसकी वॉइस यार, okay, well, Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting. I've been so busy with the fireworks, but of course, Pops is having आय to का listen to मिले ना me मिले यूमिया जरूर because मिलेगी। he can hardly hear, and I'm doing it again, aren't I? I need to make fireworks not just for you guys. It'll be fun. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they... So, what you're trying to say is that you enjoy them? Oh, I do! What I really wanted to say was, don't worry about me. Oh, sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks. Let's head to the city. चलो चलो चलो, बहुत बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा। Doesn't it hurt your voice talking all the time? हाँ सही कह रहे हो। It पहली can बार feel पायमान ने uncomfortable, सही I बात guess, बोली। But what else would I be using my voice for? Huh. You kind of have a point. Firework material Here we industry. Hey, ये भाई साहब फायरवर्क मटेरियल देंगे। Hello, Morihiko. No need to beat her. हराम को, इसकी शक्ल भी वैसी है, Just सेम using the वैसी fireworks मुझ धरे हुए materials, है। I assume. I put a batch aside just for you. Huh? Really? Because of fire, I've come सही है, to... कितनी शक्लें बनाएंगे ये लोग। Aw, come on. What about you two? Are you the ones needing... I'm hopeless. Nah, he was never gonna. Maybe if you turn At it least around. Yeah, मॉन्स्टर एंड I ज़ूमा put you मतलब straight. Don't worry about it. लुए के One's सबके perfect. शक्ल तो Even if डिफरेंट it's टाइप not है। fire- Oh, go ahead and take... No, you. Don't worry. Gratitude won't. I already said it's... There... All right, then. If you insist. Pass on my regards to... Will do. You look after your. Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. When that happens, I say to them, "Hey, this is what." सारे अंदर खड़ी हो रहा। Anyway, next we just need to go find someone to process. चाबी मैं पीछे देखो, ये रखी हो। चाबी ये पीछे देखो ना, रखी हो। हाँ भाई। Hajime, Mr. Aminoma, it's me. Ah, Yoimiya. Seems like everyone knows how busy you are. हाँ Very sorry. No worry. हाँ, Oh wait, खा लिया था। actually,
How about this? Do you need a hand? As long as... Oh, you don't mind, do you? There's still a lot of fireworks left to make. If I don't finish... Talkative as ever, the essence. If you badger Hajime like this... But this is a special circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner. So give me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Is that so surprising? It is, after all, the only option. सही कह रहे हो. Thank you for helping out, Mr. Aminoma. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. Do not rush everything at the last minute. I'll try my best. In the future, I'll get some extra materials in to cover any unexpected... Though for you, dear child, no matter how much you prepare in advance, it may never be enough. Excuse me. I will be back shortly. Wow, Mr. Aminoma! Just look at the shape and size of these grains! It's beautiful. It's been a while since I've seen you take up your tools. Of course. I have studied these techniques my whole life. They are impossible for me to forget. So, have Amenema Art and Naganohara Fireworks been working together for a long time already? Back in the day, it was my master, and Ryunosuke's father. The people may have changed from one generation to another, but the ingredients required to make fireworks have remained the same. Hajime, in the future, this will be up to you. I know. हाजिमे. ये किसी एनिमे का कैरेक्टर का नाम है ना? Any longer. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. कुछ ऐसे ना हाजिमे वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे कुछ. Just as I thought, he isn't back yet. Sorry for drag. Feels like I felt like I was neglected when we first met. You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming? Ooh, sounds great! I heard they pretty much have no rules over there, right? So people are free to live their life however they want. My pops actually received a gift from one of his old customers over there. It was from the winery or something. Dawn Winery! Their dandelion wine is super famous. Yes, that's the one. I remember when he drank it. I've never seen him enjoy a bottle of wine so much in his life. He was telling me all night about how good it tasted. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to... So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And we're looking for answers from the gods, too. You were separated from your family because of a god? Oh, that must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, I was going to ask if you guys wanted to stay here in Inazuma. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, a state of tranquility where very little ever changes. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. If you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Sometimes. That's also just how it is. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. You won't be able to win. An adventurer friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed, and you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories. Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home.
I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. I'll keep it a secret for now, though. Yoimiya, I'm back. Sorry to... Okay, good. Let... Can we... Absolutely. Complete. Aye, complete. That's way too small. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly... I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. I gotta say though, To avoid detection, this is the large... Let's store the boat here for... Make my family has... As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right? That's true. This was all a collaborative effort. Wait! Oh no! Ah, so you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. Anyway, thanks for everything, Koichi. पब्लिक कहाँ गई आपकी? पब्लिक मेरे ख्याल से खुद खेलने में लगी हुई है. नया अपडेट आया है ना. And your fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. Oh, don't worry about paying anything. Third Sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naga... Who's Third Sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pop... अभी आया है ना मेरे ख्याल से. कल आया है. तो पब्लिक अभी खुद एक्सप्लोर कर रही है. भाई यही तो गेम है. At one point, there were a dozen बाकी आगे जाके यार तो फिर बोरिंग हो जाता है families of क्योंकि the वही dead. डेली They चलता है. all अभी come नया together नया आया है to तो learn एक्सप्लोर their करने में respective families' अच्छा business. लगेगा. They were a tightly knit group of friends. It was inevitable that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we... They were all very ambitious types, and each had their खेल रहा हूँ own मैं भी. जब way तक of अगर doing business. देखेंगे बीच में ज़्यादा गैप होगा तो फिर मैं Until Koichi वैल्यू was में the मैं only one of them शिफ्ट हो remaining in जाऊँगा पूरी Inazuma. तरीके से. अभी मैं थोड़ा सा इस वजह से नहीं खेल पा रहा हूँ कि इन्वर्टर नहीं रहता, लाइट चली जाती है After और that, वैल्यू we rarely saw them. But बहुत ही when ज़्यादा one of them देर did के लिए come back बैन to मारता है. visit, पता मैं No 7 matter दिन के how लिए बैन close हूँ you वैल्यू and में. your friends are, there's always खेल ही नहीं gonna be सकता ना. some मैं ओपन नहीं distance कर सकता. after being परमानेंट मेरा separated 7 दिन for a तक मेरा long अकाउंट time. बैन मार के रखा हुआ है. As to us, those memories are eternal. ऐसे ही MLB भी होना चाहिए कि अगर AFK होता है बंदा तो अच्छी खासी पेनल्टी देनी चाहिए That's उसको. why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. यार लाइट चली जाती है ना तो फिर वो AFK हो जाता हूँ. तो AFK में काफ़ी लंबी पेनल्टी लगती है उनकी. पहले 1 घंटे की, फिर 2 घंटे की, फिर करीब 7 दिन की. MLB में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता भाई. लोग खुद सोचते कि भाई AFK नहीं होना है 1 मिनट के लिए भी. Okay, story time. So, ज़्यादा हो Koichi गए तो brings one of his friends परमानेंट from the बैन. trade association to see me. They always mention how वही मेरे साथ हुआ है. he 7 was दिन when के I लिए was मैं गेम younger, ओपन ही नहीं कर when I सकता. was a baby or something. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway. So I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. 1 दिन की कभी नहीं होती बाबा. Yes, I do. You held me once when I was just a पहले baby. मेरे ख्याल से पहले 1 मिनट होती है, फिर 5 Bursts मिनट out होती है. laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized. MLB 1 दिन का बैन देने लग गया क्या? It was so embarrassing. एक को तो अभी तक नहीं मिला. The boat is already and waiting. I'll mark the location for you on the map. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up again. Well, they won't look much better. I'm afraid that sooner or later they're... I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come.
I promise I won't cause you and your family any more trouble. I didn't mean it like that. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryo Commission does catch up to you, then make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do? I didn't used to like this place at all. That's why I left. But looking back on things now, I was really just running away from my once I started to realize that, I got restless. So What a pity. Talk to us about it. If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryo Commission. If only they weren't so overzealous, there might be a way. Oh, that's right. That elderly couple, old customers of ours, their sons तो were बहुत ज़्यादा बार हुआ होगा. quite high up as well. 1 से 2 बार के एफके में नहीं होता. That's it. I'll go talk to them. क्योंकि मैं खुद हुआ हूँ, मुझे अभी तक नहीं हुआ. मेरे ख्याल से मुझे मैक्सिमम हुआ है 5 मिनट का बैन बस. इससे ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं. They're really nice people. All right, you should. Okay, let's go. Wait, hang on. What about the fireworks? All those material pops? Pops? No, never mind. I'm. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer, just time. एमएल की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ही नहीं. एफके वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं. अब देने लग गए हैं वैसे. पॉइंट काट लेते हैं. वो कम हो जाता है, क्या नाम है, गोल्ड कम हो जाता है डेली का. कैप कर देते हैं. अभी ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे. लेकिन अब भी अपने यहाँ बैन है. वहाँ जाना था लेकिन छोड़ो. Well, if it isn't Yoimiya, come on in, dear. Come and take a seat. नहीं अभी नहीं देखी. Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a very difficult time. मैं उसकी स्क्रीन देख रहा था. मेरे ख्याल से उसकी भी आने वाली है ना, क्या नाम है. But seeing as they came all this way, अरे यार इसका नाम भूल गया मैं. वो क्या नाम है वो छाते वाली का नाम भूल गया यार मैं. काफी समय से खेला नहीं. उसकी नई स्क्रीन आने वाली थी. Oh, thank you, dear. क्या नाम है उसका? Your family is so good to us. I wonder if. Of course you. कगूरा. हाँ कगूरा. उसकी स्किन कोई आ रही थी, वो प्यारी लग रही थी यार देखने में. It used to be that I could spend. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started. अच्छा उसका रिवैम्प हो रहा है. I suddenly. No worries. अभी वो तो पहले से इतनी ओपी थी, उसमें क्या रिवैम्प कर रहे हैं. No, no, no. We can't be putting you to. I'll just go. It's fine. It's no. Sure. The old folks are. मैं पहले से ही इतनी ओपी है यार कगूरा. उसको क्या रिवैम्प करने की जरूरत भी नहीं है उसको तो. काफी पुराने कैरेक्टर, उनको रिवैम्प करना चाहिए. चलो अच्छा है सनन को रिवैम्प कर दिया. And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. विश करो ब्रो. मैं विश कर चुका अभी. मुझे मिली How have you been? Keeping well? येनफेई एंड
Song you. Yeah, same as usual. Not much has changed. All thanks to the support of our loyal customers. We sold some fireworks to Liu a while back, and word is... That must mean a lot more work for you, though. If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help. Hmm? We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow, thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, but then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff and Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. Being close to family is better now, Mr. Huh, didn't you make a good point? Oh, I'm sure they'd... Thank you. Thank you. Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. ये क्या है? कहाँ है खोल लो? मुझे लगा मैंने फ्री दबाया था, लेकिन ये फोर्स दबा. That was quick. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have... Speaking of youth, do you know what? Oh, 50 years since... Well, if you... Oh, stop trying... Well, maybe you're right. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Nagana Hall, even as it was rising up into the sky. But then it exploded. Before I knew what was happening, apparently, I'd already... 50 years. But 50... I had no idea what... Oh, no. Seeing that... what? Enough about us, though. Yeah, it's a difficult... Saku... Huh? You know him? He was our boy's best friend when they were inseparable. But one day... Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful, and wanted to see what the outside were. But our Keisuke... I see. Keisuke said nothing to me or my wife. Eventually, whether out of pent-up anger or... If it was any... But since... What a strange... I understand now. Now I finally... Two best buddies in childhood. Well, we can find... Yes. I think after... Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. बड़ी लंबी लंबी स्टोरी चल रही है यार. मुझे भी मैप खोलना है. ये इतना हिस्सा बचा हुआ खोलने के लिए. ये 2 टेलीपोर्टर बचे हुए हैं. Yoimiya, something bad's happened. Huh? Pops, are you alright? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, but they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryou Commission wasn't able to capture... Oh, this is bad news. Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. We need names. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. I wish I'd caught their names. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for... We can't let that happen! Come with me. Let's track them down. इसमें एक रिक्वेस्ट. हाँ बोलो. क्या बात है ब्रो? It's Musasaka and his friends! Hi, Yoimiya! Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh,
Mr. Ryunosuke is making them right now. Aren't you gonna play with it? I'm sorry, but I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet LOL candy, the खेलो one you guys love. LOL अबे LOL आए तो यार Also, I वीपीएन लगा के खेलने में मजा नहीं आती यार वीपीएन पहले मैं लगाऊं फिर इसके बाद खेलूं और हर बार खेलने के लिए वीपीएन लगाना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए No, don't worry. Be good kids and we will. बस इसी दिक्कत है प्री रजिस्टर तो मैंने जाने कब से रखा साला वो आ ही नहीं रहा गेम वो Sakujiro still hasn't made up his mind. I guess I'll have to step in. Look, there are people from the Tenryu Commission over there. It must be them. Sorry, official business. I can't let you pass. नहीं यार बिना वीपीएन के नहीं चलता वो खेलता है मेरा दोस्त खेलता है मैग्मा नहीं है वो खेलता था क्या खेलता है We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. फर्स्ट वीपीएन लगाना ही पड़ता है What a nuisance. Well, you've only got yourself to blame. well Time for a light show. Whoa. I must withdraw. क्या बिल्ड लगा थी इन लोगों ने Warpis Noveless ah Talent 966 हाँ Constitution तो वही दिया वेपन दिया है फिर डैमेज वेपन है न्यू वाला थंडर पल्स ओ पीसी की बात कर रहा है भाई पीसी में सर्वर नहीं है मैंने खेला पीसी में यहाँ का सर्वर ही नहीं है ये सर्वर ही नहीं है मेरा एमएस पता कितना आता है करीब 200 के ऊपर जाता है How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your actions. हाँ वो तो है लेकिन यहाँ एशिया सर्वर भी नहीं है ना उनका साला एमएस पता कितना चलता है मैं खेला था मेरे वही होता 200 के ऊपर मेरा एमएस जा रहा था मैं मार आज रहा था पढ़ उनको कल रहा था तो खेलने कोई फायदा ही नहीं हुआ डोटा ट्राई कर रहा था लेकिन डोटा बहुत हार्ड है यार उसकी टोटल बिल्ड भी सब अलग है तो डोटा को बहुत समझना पड़ेगा डोटा भी मोबाइल गेम है ना डोटा तो बहुत पॉपुलर है यार Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. If this is to be my fate, I accept it. I have nothing हाँ, else to... डोटा की सीरीज भी है मूवी भी आई थी डोटा की भी एक Whatever you say. डोटा काफी बड़ा गेम है भाई उनका मैप भी वो काफी बड़ा है यार मतलब देखने में बड़ा मस्त लगता है बस ये गेम बहुत हार्ड है Wait! It doesn't have to end like this. Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people. It's okay, Yoimiya. The past is the past.
And why did you risk life and limb to get yourself back into brave Inazuma? son And of why were a you so reluctant to leave after you got Genshin. here? Brave son of in front of boy's mother. I'll tell you why. This is ये क्या why. है? This is the chance you... I have ये nothing to बी say. का मतलब क्या? वो बताओ. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission out of respect. What are you talking? You left all your... I can see it in your faces. You both have so much to say. And you're just gonna choose to keep it all... Tuh. Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. No, I won't leave it. I will not stand by and walk Keisuke. तुमने देखी है? मैंने नहीं देखी. The duel. So, let's do it your way. अभी मूवी आई थी I'll उनकी challenge तो you मैं to a सोचा duel. देखने की. If I win, and the same अभी goes for you, मूवी sir. आई थी. You don't मैं say देखने की anything सोच now. रहा था, लेकिन अभी मैं इस You समय have देख another रहा हूँ. chance. दोस्त ने मैंने नहीं देखी थी ड्रैगन बॉल्स. मैं देखी ही नहीं. And if you lose, तो अब I इस would समय like मैं to वो collaborate खत्म with करने की Sakura, कोशिश कर रहा but हूँ. accept the Tenryou Commission's punishment. अभी देख रहा हूँ ड्रैगन बॉल Z. Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Becca? Those are supposed to be one-on-one! Alright, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! तुम आए थपके ऐसे कैसे? आप ड्यूलिट की पारी. चलो निकल. बैकअप बैकअप देने आए थे. बैकअप. Guys. बैकअप देने आए थे उसको. Sir, they are too strong. We need हाँ नहीं more मैं men. देखा नहीं. ऐसा नहीं बताया. एक्साइटमेंट हो जाएगी. देखने का मन करेगा फिर. Stand अभी नहीं बोला. अभी मैं एक जगह फोकस कर रहा हूँ. मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ. बड़ी मुश्किल से 160 एपिसोड पे पहुँचा हूँ. 160 नहीं आए. 200 एपिसोड है या 300 एपिसोड है मेरे ख्याल से जी में. 200 है मेरे ख्याल से. 200 हाँ ऐसे ही है. बड़ी मुश्किल से 150 एपिसोड पे पहुँचा हूँ 160 पे. अभी भटकना नहीं चाहता कहीं पे. I thought I told you to stay away. पहले ड्रैगन बॉल खत्म करी. अब जी पे हूँ. Yes, sir. Sorry. इसमें और कोई भी एनिमे चल नहीं रही है. अभी वो भी देख रहा हूँ. रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम. Was back then. उसका तीसरा चैप्टर चल रहा है. तीसरा सीजन. Why were you काफी so सारी एनिमे convinced चल that we रही है had यार. things अभी to say to each तीन other? देख नहीं. Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework. भाई मुझे बस उसका वेट है. शील्ड हीरो का सेकंड सीजन आने वाला मेरे ख्याल Then से your parents told me about what happened September between या you when you were अक्टूबर में. younger. Once I'd heard the story, and that's why I simply nobody वेट sets off. फॉर. The reason I came back, it wasn't that I'd changed my mind. Yeah. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru. देखा है. बहुत the मस्त justice लगी of भाई. Fontaine. डार्लिंग इन द फ्रैंक्स It all देखी. left काफी a अच्छी लगी. deep impression. I was glad that वो I तो left Inazuma. उसमें इंस्टा पे इतना ट्रेंड चल रहा था उसको लेके. वो डांस वाला तो मुझे देखना ही पड़ गया. I was देखे क्या है. mistakey, and I was proud of that. काफी मस्त What I सीरीज. should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here. देख चुका No, I हूँ. let सारी go of all those फ्रैंक्स हो delusions of गई. grandeur. I just felt that ज़्यादा I एनिमे देख never- चुका हूँ. बस इसमें काफी लॉन्ग गए. मैंने यहाँ तक सोच I मैंने never ran away. नारुतो की शिपुडेन मैंने 2 बार खत्म करी है. सोच कितने एपिसोड होंगे उसमें. Huh? I don't know अब about मैंने you, सबसे ज़्यादा but पता है one वो thing देखी है. is for me. फूड वॉर्स देखी तूने? मैं फूड वॉर्स के जो मेरे ख्याल से 4 से 5 सीजन है उनको मैं 4 से 5 बार खत्म कर चुका हूँ. But I just had जो to काफी come back मस्त and लगती है. visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for it. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I बहुत decided मस्त nothing है यार. more than फूड to वॉर्स bring में them बहुत home. मस्त है. My role मतलब मेरे was ख्याल से to मुझे push 1 से the 2 followers of the सीजन्स Sengoku मेरे को मेरे ख्याल से Empire जापानीज में and देखने पड़े. confiscate people's visions. It's लेकिन what बाकी I सारे signed up सीजन्स for when I नहीं. joined the अभी आ गया Tenryou मेरे ख्याल से Commission. 14 सीजन भी उनका आ गया है डब में.
लेकिन सीरीज बहुत मस्त है वो। I do wonder. मैं बता 4 से 5 बार खत्म कर चुका हूँ, 5 सीजन है। The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka, and forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I understand now. I had heard there, by the way. Happy ending. Sorry. Never mind that. I can't make an... Thank you very much. No worries. Yoimiya! The way you took command of that... Oh, what can I say? I like to talk. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. Sakujiro and... Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the 670 पे firework that I अटक want to गया। give to you. किस चीज में यार? पहले जाके मैं थोड़ा सा कंडेंस मतलब कि रेजन वेस्ट करता हूँ, मेरे पास इतना पड़ा हुआ मैं यूज़ नहीं किया। आज कौन सा फिल्म है? नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं। पेंट्रो नैंच लेवल अरे वो क्या बताएं भाई, किस्मत खराब है यार। अटके नहीं है भाई, 180 हुआ था, 80 हो गया था, 800 सॉरी 80 बता रहा, 800 हो गया था, लेकिन फिर 2 गायब हो गए। मेरे मैं बता रहा हूँ 200 मेरे एनिमी टीम ने लैला लिया था भाई साहब। एमएम तो लेना ही नहीं चाहिए भाई, इसमें एमएम बहुत गंदा चला है। एमएम में लैला तो लो ही नहीं, क्योंकि उसके पास भागने के लिए कुछ है नहीं। हाँ लॉन्ग रेंज तो है लैला के पास, लेकिन अगर सामने एसेसिन है तो बहुत बुरा मार खाती है। गैंगर हो गया, और नीचे के रैंक में देखो एमएम चल जाता है, मतलब ग्रैंड मास्टर हो गया, एपिक हो गया, यहाँ तक लेजेंड 5 तक भी एमएम चल जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी एमएम बेकार हो जाता है। कुछ एमएम है जो हाँ संभाल ले जाते हैं। हाँ अभी भी चलो लेट गेम के लिए रेट्रिब्यूशन लिया लैला। हाँ हाँ भाई, उसके बाद एस्केप के लिए तो और वैसे कुछ नहीं बचा। रेट्रिब्यूशन लिख आई, फ्लिकर लिख आती, चलो थोड़ा सा और ऑप्शन बचता रेट्रिब्यूशन में, और उसके बाद कोई एस्केप के लिए ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको किसी ने टारगेट कर लिया तो भाग ही नहीं सकती। किस रैंक की बात कर रहा है? हाँ लैला के लिए खुद की टीम होनी चाहिए, कम्युनिकेट कर सको कि भाई मुझे बैकअप चाहिए, मेरे साथ में रहो। एमएम के लिए यार खुद की टीम होनी ही चाहिए। अगर एमएम लेके खेल लो तो तुम्हारे जो टैंक है ना वो तुम्हारे साथ का प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि एमएम को बैकअप चाहिए ही होता है।
I feel with sun. हाँ आराम से मर जाएगी यार, बता तो रहा हूँ. एमएम अगर लेके खेलना तो भाई खुद की टीम हो तभी बेटर है. क्या गंदे स्टैक्स लेके बैठा हुआ हूँ यार मैं. दोनों में डिफेंस ही रोल हो गया. चलो इसी का डोमेन ही कर लेता हूँ जाके. न्यू डोमेन्स में क्या आया है? मटेरियल है, पता नहीं किस चीज़ का मटेरियल. हाँ मैं अपने भाई का अकाउंट ले रहा हूँ. हाँ? भाई कौन सी रैंक में है? वाह, और एमएल खेल रहा है. सही है. सही है सही है. अभी ये सिखाओ, आगे जाके प्रो प्लेयर बनेगा. अच्छा दया आगे तो हार गए. अच्छा उन्होंने सरेंडर मार दिया. हाँ तो नीचे के लेवल में ही होता ही है भाई. कूद जा भाई मेरे, कूद जा. चल एक क्लेमोर यूजर लेके चलना चाहिए. हाँ काफी ज्यादा फार्म हो जाओ तो यही होता है. आज क्रिम्सन फार्म करते हैं, थोड़ा सा दर्द लेने चलते हैं. इसे क्रिम्सन फार्म, इसमें मुझे क्रिम्सन नीचे में क्या से. हाँ इसमें सुक्रोज फार्म करनी है. एलिमेंट मास्टरी, एमिनो बोनस.
एलिमेंट मास्टरी। टू नोबलेस। Reduced to just standing around. How absurd. सेवन मिनट हो गए हैं। गुड गेम। अच्छा टोटल टीम का 1K है भाई साहब। वॉरियर वालों के साथ खेल रहे हो क्या? ना नीचे कौन फार्म करता है? नीचे उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि फार्म होता क्या है। नीचे के रैंक में कोई अगर अच्छा खेल रहा है तो समझ लो उसका स्मर्फ अकाउंट है। You can't run. न्यू आईडी। तभी वो समझ गए होंगे भाई कि स्मर्फर तुम स्मर्फर आया है, वो समझ गए होंगे आराम से। PGMI यार मज़ा नहीं आ रही खेलने में। खेला यार वो बात नहीं रही। गेम में बनता था, अब उसमें मज़ा नहीं है। शिफ्ट होऊंगा तो वैलो पे ही होऊंगा मैं। बस ये थोड़ा सा मेरी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद वैलो ही होगा यार। कहाँ चढ़े हो भाई साहब तुम? जा तुम नीचे आओ, नीचे आ तेरी ऐसी तो। हाँ स्टम्बल गाय खेलने की सोच रहा था मैं। हाँ मोबाइल ही गेम ही है ना स्टम्बल गाइस हो। अगर पीसी खेलना हो तो फॉल गाइस ना खेलो, नहीं फिर वही अकेले खेलने मज़ा नहीं आती। स्टम्बल गाइस खेल सकता हूँ मैं। काफ़ी खेला है मेरे पास तो। मेरे ख्याल से उसमें आउटफिट जब फ्री था तब खेल रहा था। अभी तो इसमें उन लोगों ने आउटफिट बाय वाला ऑप्शन कर दिया है। बेटर लिटिल पास लेके आ गए इसमें। गेम काफ़ी अच्छा है वो। Worthless. Here. Worthless.
outlines your fate. Witness the power of Gua. Judgment. It's like overtime today. Yeah. Useless. No, my sword. मॉन्स्टर का ये रहा। फिशल की अल्ट है, जितने भी आसपास एनिमी होंगे उनको इलेक्ट्रो डैमेज होगा। एक तरह से इलेक्ट्रो अप्लाई हो जाएगा सब पे। ऊपर है क्या यार? अबे यार विशल के साथ शिंगचू का कॉम्बिनेशन काफ़ी मस्त है। कंटिन्यू डैमेज होता रहता है। भाई हमारा शिंगचू सबके साथ में बैठा है। रोजारी के साथ हम कंटिन्यू फ्रीज कर सकते हैं। तो हमें डैमेज होगा ही नहीं। कौन बचा हुआ है भाई? अबे इतनी जल्द एचपी लेके क्या कर रहे थे? अरे भाई साहब उसकी तो लग रहा था कमर टूट गई है। कौन आ रहा है? ओ तुम्हारी तो इजी। यहाँ पे भी रूइन गार्ड आएगा मैं ख्याल से। नहीं अच्छा हम भी इसे करके देखें। नहीं हमसे नहीं होगा, दूर से करना तो थोड़ा सा।
go. Useless. Ring cutter. Shiver. You can't run. Judgment. मुझे क्या है भाई, थोड़ा सा तो हिल लेने दे, थोड़ा सा। लेकिन नहीं, हम हिलने ही नहीं देंगे उसको। थोड़ा क्या, जरा सा भी नहीं हिलने देंगे। ओ वहाँ पे आएंगे फितुई एजेंट्स। No, my sword. Judgment. Witness the power of good punishment. You can't run. Yeah. तुमको नहीं हिलने देंगे, तुम ज़्यादा खतरनाक हो। Useless. You can't run. Ring cutter. You can't run. हम्म किधर गई एक? बाहर चली गई क्या वो? अरे यार, मुझे मैं तीनों पकड़ लूंगा। ओके, गुड नाइट। नहीं बस चाह रहा, बस कंटेंट बना दूं। चाह रहा एफबी में जाके वैल्यू खेलूंगा 1-2 मैच। 1-1.5 घंटे की स्ट्रीम एफबी पे कर दूंगा बस। इसमें हो नहीं पा रही ना एफबी पे, लाइट की वजह से। तो इसका कंडेंस बना दे हम। हाँ Don't we have a job to do? Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. क्या नेम कार्ड मिले हैं क्या? ओह हर्षित कौन? हाँ हर्षित भाई गए हैं सोने बस।
हम भी एशिया सर्वर के डेली कमीशन और कंडेंस थोड़ा सा वेस्ट कर दे, फिर एफपी पे जाके स्ट्रीम करनी है यार 20 घंटे। हाँ गुड नाइट। मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। कंडेंस का आइटम नहीं है क्या मेरे पास? वैसे वो पहले से ही कंडेंस है काफी। 4 है। बाय गुड नाइट। Let the show begin. Da-da-da! Jumpy, jumpy, go! कंडेंस बनाने के लिए मैं डेली बॉसेस नहीं मारे भाई, डेली बॉसेस ही मार देता हूँ। Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! Odds revealed. Pew! Jumpy, jumpy, go! Hey Ash, good news man, we are getting free 5-star character। कौन सा भाई? किसकी बात कर रहा है? कौन सा कैरेक्टर 5 स्टार मिल रहा है भाई? जेंसिन कोलैब कर रहा है किसके साथ? ये मत कहना विन डीजल के साथ में कर रहा है। सी ट्विटर यार, तुम ही बता, तब ट्विटर देखने जाए मैं, मतलब मैंने देखे ही नहीं। मैं अभी बस खेलने बैठा हूँ। सुबह से मैं सिर्फ खेल ही रहा हूँ। मैंने स्टोरी में सोचा था ख़त्म कर दूंगा कितनी जल्दी, पहले 5 घंटे मैंने सुबह खेला, फिर अभी खेल रहा हूँ। मेरी स्टोरी नहीं एंड हुई मेरी अभी। योमिया की स्टोरी चलने लग गई। चढ़ जा, उसको पकड़ के रहेंगे, चढ़ ऊपर। क्या लेने आए थे, क्या मिल गया?
होराइजन ज़ीरो डाउन है गेम। आओ देखना पड़ेगा। होराइजन ज़ीरो गेम नाम तो सुना है मैंने। मेरे ख्याल से पीसी में भी तो है कि प्ले स्टोर पे ही है, उसमें प्ले स्टेशन पे ही है सिर्फ। मेरे ख्याल से है यार, मैंने स्टीम पे देखा होराइजन ज़ीरो करके गेम देखा है स्टीम पे भी। Dodge this. Don't get frostbite. हाँ मैंने देखा ना, स्टीम पे देखा था मैंने। होराइजन ज़ीरो करके गेम है। By royal एनिवर्सरी का गिफ्ट मिल रहा है ब्रो, मजा आएगा। अच्छा यही इसी को एनिवर्सरी का गिफ्ट समझते हैं हम लोग। हाँ इसको कोलैबोरेशन का गिफ्ट समझ लें या एनिवर्सरी गिफ्ट समझ लें, अपने पास ऑप्शन है। मतलब इस बार प्ले स्टेशन वाले को पहले मिल रहा है। ज़्यादा दिन का गैप नहीं दे रहेंगे। Let the show begin. Odds revealed. Jumpy Dumpy Go! Boing boom! Yeah. Boom! Boom! Yeah. La la la. चलो कम से कम दे तो रहे हैं, इतना ही काफी है। अरे यार आयका यार कसम से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी योमिया लगी। स्टोरी कर रहा था, योमिया मुझे ज़्यादा बेटर लगी। ठीक है आयका भी ठीक है, लेकिन लुक्स में और वॉइस ओवर में मुझे वो योमिया ज़्यादा बेटर लगी। इतना ऊपर इधर से पता नहीं है। मेरी भी 60 के आसपास की अभी मैंने पुल किया था तो मुझे मिला। हाँ येनफे मिली है और सॉन्गिंग मिला। इसके बाद नेक्स्ट बैनर मेरे ख्याल से योमिया का ही होगा। इधर से ज़्यादा ऊपर चढ़ना था क्या?
हाँ तो भाई बता तो अपनी अपनी पसंद है भाई, तुझे आएगा पसंद आई, मुझे योमियो पसंद आई। वैसे पायरो कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास में, तो थोड़े बहुत और सही। ए यूरोप में मैं योमिया की कोशिश करूंगा, और इसमें मैं आएगा की, इसमें भी मेरी 40 के आसपास चल रही है। सो देखते हैं। By royal decree. एक बात हाँ, बाल तो ठीक है, लेकिन मैं दोनों में देखूंगा। मतलब यूरोप सर्वर में मुझे ऐसा कोई खास क्रायो की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में है। सो मुझे योमिया ज़्यादा बेटर लगी, सो मैं योमिया को पुल करूँगा। बाकी एशिया में मैं आइका पुल कर सकता हूँ। क्या है वो जस्ट क्या है था, क्या था ये, इतनी जल्दी क्या थी? अरे फ्रीज 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 फ्रीज। Midnight Phantasmagoria. Dumpty Dumpty Go! By royal decree. फिजिकल डैमेज वो ट्राई किया, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्सचेंज हमने ट्राई किया। डिफेंस के बदले डिफेंस दे दिया उन लोगों ने, 9 डिफेंस दिया हमने, उन्होंने 3 डिफेंस हमको वापस दे दिए डिफेंस टैक्स के साथ में। क्या ये लेके जाओ। हाँ मैंने ट्राई किया, मैंने 9 अच्छे खासे डिफेंस वाले उनको दिए, उन्होंने 3 हमको वापस दे दिए। हाँ मतलब वो भी रैंडम ही है यार, मतलब कुछ भी मिल सकता है, वो कुछ भी थमा सकते हैं वो। चाइल्ड मार सकते क्या? नहीं चाइल्ड जरूरत नहीं है मुझे अभी, बुक से
9 के बदले 3 दिया, बताओ उन लोगों ने। इससे अच्छा तो मैं उसको एक्सपी मटेरियल में यूज कर डालता। जाने दो बे, जाने दो साले, फ्रीज करो इन लोगों को। Freeze! This moment will be frozen in time. Over here. Let's dance. Let me amuse you. Ow! Sparks and flash! La la la. It was an accident. अच्छा तुम लोग मार रहे थे बे? Let the show begin. हाय रे क्लियास 2 बार मर गई। अगर ऐसे ही देंगे वो लोग एक्सचेंज में, तो इससे अच्छा उसको एक्सचेंज मटेरियल में यूज करा लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। भाई 9 के बदले 3 दे रहे हैं, वो भी रैंडम दे रहे हो तुम, तो फायदा क्या हुआ एक्सचेंज का भाई? हम काहे यूज करें? Go, Barbara, go! हाँ मैंने पूरा तो नहीं खोला है। हाँ फर्स्ट आइलैंड पूरा खोल लिया है, डोमेन वोमेन। मैं स्टोरी कंप्लीट करने में लगा हुआ था, मैंने कहा स्टोरी आज पूरी कंप्लीट करके रहा हूँ। बता दो 5 घंटे खेला मैंने, फिर 5 घंटे के आसपास खेला को, लेकिन स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। उसकी ख़त्म हुई तो यूमिया चलने लगी। Oh, it's repeat. Dumpty, dumpty, go! Boing, boing. हाँ लोकेशंस काफ़ी मस्त है यार, काफ़ी अच्छा लगा मैप। मेरे को पहला ही आइलैंड काफ़ी अच्छा लगा, जिस हिसाब से डेकोरेट किया गया है। बस यार ज़्यादातर कैरेक्टर सेम है, ज़्यादातर स्टोरी में मैंने 3 कैरेक्टर्स की, मतलब 3 कैरेक्टर्स को बचाया, लेकिन सब के सब सेम थे। मतलब एक कैरेक्टर को बचा के लेके आया, फिर योमिया का फादर, और एक और कोई समुराई टाइप का था। बस सब तीनों के फेस सेम टू सेम। ये क्या है? एनपीसीज पे इन लोगों ने लगता है ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, सबके सब सेम लग रहे थे। हाँ वो तो है, अभी गेम में मज़ा आया यार। बस अगर गेम ही हिसाब से एक्सप्लोरिंग का ही बनाया, वही नहीं, जब गेम में बचेगा तो कहाँ मज़ा आएगा। गेम को इसी सर्कल में लोग घुमाए में जुटे थे, डेली कमीशंस करो डंजन करो, डेली कमीशंस करो डंजन करो, तो गेम में मज़ा कहाँ से आता? छोटी बड़ी अब नया आइलैंड दिया, एक्सप्लोर करने में मज़ा है। ओपन वर्ल्ड का वही मज़ा ही है यार, एक्सप्लोर करना। एल्बियन ट्राई कर ऐश, मस्त गेम है भाई, मैं तो वही खेल रहा हूँ। मैं
इतना सब कुछ करने के लिए है कि बोर नहीं हो सकते। उसमें पार्टी तुम जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी बना सकते हो। मैंने टोटली रियल लाइफ से रिलेटेड टाइप का गेम दे बना दिया। मैं भी पूरा खोला नहीं। ये रे एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट, इसमें मुझे क्या चाहिए? चलो एक करके देखते हैं। नोवेलियस नहीं है मेरे पास इसमें हम लगाते हैं क्या चीज़ ज़्यादा है ब्लर ना। ओ ये तो सही है, इसको क्यों हटाओ? ये भी सही है, सब मिलेगा इसको। फ्लावर में ज़्यादातर बैटरी होता है मेरे ख्याल से, ये बेकार है। हाँ ये रहा डिफेंस परसेंटेज, ये अटैक, ये भी डाल दो, डबल एचपी डाल दो। ये ठीक है एक तरह से। हाँ अभी तो अब जेंसिंग ही चलेगा यार। एचपी क्रायो डाल देते हैं हम, हाइड्रो डैमेज बोनस डबल डिफेंस है। देखो ठीक है ये किया, अब देखो हमें क्या मिलता है। नौ के बदले 3 आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ये देखो ये रहा, डबल एचपी परसेंटेज मिला है हमें और एक डिफेंस, ठीक है। ये आर्टिफैक्ट्स, ये रहा फिर से एक और एचपी परसेंटेज जो हमने दिया था वो हमको वापस दे दिया इन लोगों ने, और एक ये रहा डिफेंस परसेंटेज। 9 के बदले हमें ये 3 मिलेगा। हम बेवकूफ़ है जो हम फिर ये करने जाएंगे भाई, वही 9 हम इसमें नहीं डाल देंगे अपग्रेड मटेरियल्स में, कम से कम ज़्यादा एक्सपी तो मिलेगी हमें। बेकार है भाई ये भाई। Once there was a glorious मतलब kingdom हाथ दे भाई, यहाँ established भी इन लोग को डालना जरूरी था भाई, फिर मतलब ही क्या हुआ भाई तुम्हें एक्सचेंज का? एटलीस्ट मेन स्टैक्स तो कंफर्म कर देते कि हाँ तुम्हें मेन स्टैक्स ही मिल जाएगा, बाकी सब स्टैक रैंडम कर देते। ये तो फिर वही बात होगी जैसे हम डोमेन कर रहे हैं वैसे यहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं, बस यहाँ हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है। ये लोगों ने इसमें क्या दिया? आप डेली कमीशन हम लोग चूज कर सकते हैं क्या कि हम लोग को कहाँ की करनी है? पहले तो रैंडम देते थे ना। द कमीशन क्वेस्ट, ओ यहाँ से हम लगा सकते हैं किस रीजन में चाहिए कमीशंस। हाँ आइडिया वो बेकार है भाई, ये मतलब ही नहीं है ना भाई कोई इस बात का कि हमें मेन स्टैक भी कुछ कंफर्म नहीं करके दे रहे हैं। हम 9 लगा के 3 अगर डिफेंस ले रहे हो तो मतलब क्या हुआ उस बात का? हमारा तो एक तरह से नुकसान ही हुआ। 6 आर्टिफैक्ट्स का नुकसान हुआ, सोच 6 आर्टिफैक्ट्स। हाँ इसमें मेरे पास प्रीमो है ही नहीं। स्टोरी करेंगे तब होगा। अच्छा मैंने इसमें कलेक्ट नहीं किए हैं अभी तक कुछ। 600 प्रीमो तो यहाँ से मिलेगा हमें। राउंड 7 बंडल, अच्छा बंडल है।
नहीं मैंने नहीं ट्राई किया। क्या बढ़ा दिया है क्या इन लोगों ने प्रीमो? और ड्यूलिप का फ्रेंडशिप है ना। मोर प्रीमो कुछ फ्लोर बढ़ाए हैं क्या? मैंने नहीं किया। इसमें 9 से ऊपर मैं जा भी नहीं सकता ना। Ad Astra Abyssosk. Welcome to... Ad Astra Abyssosk. Welcome... ये तो है। चलो 600 प्रीमो मिले हैं, 700 हो गए हैं, ये 20 करते हैं फिर गुड नाइट बोलते हैं। देखते क्या मिलता है यहाँ से। 1 से 2 पुल में, 1 से 2 में कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए क्योंकि पहले से मैं करके बैठा हूँ। नहीं मिला यार। लगता है अभी मुझे रिसेंटली कुछ मिला है, याद नहीं है। वाह इसमें भी नहीं मिला यार। अरे हद है भाई, मजाक हो गया। तो मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए। शॉप से बाय करके एक और पुल मारेंगे। इससे कैसे नहीं मिला? लास्ट बाय कर सकते हैं ये। ओके इसमें तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिला यार, हद है भाई। कुछ मिला होगा मतलब मुझे याद नहीं है। कुछ तो मिला होगा। 60। अरे एक और पुल होता तो और हो सकता था। भाई कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वाह मिस C2 है मेरे ख्याल से। हाँ शायद से C2 है मेरी, नहीं C3 है। इससे कुछ है। हाँ C3 इसमें फिसल है, मैंने ध्यान नहीं दिया यार ये में। है इसमें का फिसल और मुझे तो फिसल मिल गई इसमें। इसकी बात कर रहा है क्या? स्टैंडर्ड बैनर की? इसमें तो फिशर है नहीं। हे ऋषिक। I wonder when I'll be as tall as my big sister. अरे ऑफ, अच्छा ऑफ कैरेक्टर मिल सकता? मुझे तो अभी तक कभी बैनर में ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला। वैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है। बढ़िया है भाई। हाँ बस मोरा देख रहे हो इस समय क्या चल रहा है, क्या अमाउंट है मोरा चल रहा है।
बुक्स नहीं है। सैटरडे संडे अवेलेबल होंगे। है नोएल है, बिनोएल बिल्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नोएल हैंडल कर लेगी। ओ हाँ भाई साहब, प्लीज जरा इधर आओ, तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा हुआ। खतरनाक स्माइल के साथ में नो और हाँ। हाँ बस मैं भी जा ही रहा है, मुझे भी 1 से 1.5 घंटे करना पड़ेगा एफपी पे स्ट्रीम। ओके, गुड नाइट ऐश, गुड नाइट ऋषि, कल मिलते हैं। हाँ नोएल कर लेगी बट फिर इनका मुझे स्टोरी करी, मुझे आयका ज़्यादा वो लगी, योमिया बेटर, तो मैं यूरोप सर्वर में योमिया के लिए पुल करूँगा। मुझे नहीं चाहिए आयका, नहीं चाहिए, बिल्कुल पसंद ही नहीं आई मुझे आयका, मतलब मुझे लुक्स में भी ज़्यादा बेटर नहीं लगी, वॉइस में भी नहीं, उसकी वॉइस भी काफ़ी क्यूट डाली है इन लोगों ने योमिया की। सही है, अपनी अपनी पसंद है। जैसे चलते हैं यार, गुड नाइट यार, कल मिलते हैं। 1 घंटे का स्ट्रगल हम जाके एफपी पे कर लें, काफ़ी समय से नहीं की मैंने एफपी पे स्ट्रीम। मेरी कल से कल करते हैं ना ब्रो। अब इन्हें लॉग आउट कर दिया। आयका मिल गए मतलब वो बहुत ही बढ़िया यार।